the version of BD Basu or for that matter MPJ. No, they want you as a person. If I am writing a thesis, so what is expected? That Payal Thaure's version needs to be expressed in that thesis, and that is what we need to learn today. So see what happens when we go in for thesis writing or research paper writing or dissertation. One very common I think phase which every student, irrespective of the aspect, that whether you are in LLB, LLM or PhD, the very first thing which comes is the mental block. And what is that mental block, or I can say the obstruction, is who will write the research paper, why to do PhD thesis, or why to submit a good dissertation, because I do not have time. No, this is I think a very common excuse. Mane sir and Nathani madam will agree with me that this is the first reason which student gives to us, that they do not have time or have a limited time. So what research expects from you is that you be consistent. Not necessarily that you are going to be there throughout the day. Definitely not. We belong to social sciences. We are not working in labs. Our laboratory is this complete world. Okay, so we are not confined to the four corners of the wall. So please just think at that point of view that you are not going to spend your 24 hours there. Rather you should go out, meet people, discuss this topic, and see how much input you can get. So time constraint is definitely not an excuse which we are going to buy when we proceed for writing the thesis or doing the research. Second is a very common obstacle which many students tells to us is that there is no content available. इस पे तो material ही नहीं है. And my urge to you all, urge, it is like in bold, italics, underline में मैं कह रही हूँ, if you are finding any topic today's era mein, if you are finding any topic on which you feel there is no content, please go ahead with that topic, because that is going to be the best topic on which you can produce your version. So don't go with, oh my god, there are only 2 papers or only 3 papers, what I will do. That's not, because see, when you get lot of content on anything which is available easily on the internet or in the libraries, there is less scope for you to be the researcher there, because already multiple thoughts have been written already by the established authors, the judges, etc. So very few space has been left for you to put something new. Definitely you can do that. I'm not saying that you cannot do that, but that requires lot and lot of intellectual skills. It is not easy to touch any traditional topic, because those topics are mature topics in legal studies, and if I want to comment something on that mature topic, I need to be that much thorough. So if my preparation is that, definitely I can touch and deal with any of the traditional topic which are there. But suppose if I am dealing with something which is very new, let us say you want to talk about artificial intelligence, space law, or something like that, on which we know that now the studies are coming, so probably the best time to work on it, because there is less resource and lot of scope for you as a researcher to write. So select that topic. Third is resource scarcity. The same thing I am saying, even if there is restriction to access that literature or resource scarcity, don't worry, just go for it. Fourth is inspiration drought. Now many a time student feel that क्या research करे, क्या thesis लिखे, madam आप ही कुछ बता दो. So don't do that. Okay, you need to find your own inspiration, because ultimately when a thesis is written, it is your brainchild, and you have to deal with it. I mean, you have to take care of it as if it is your own child. So जितना वो आपके चॉइस का रहेगा ना, आपका अटैचमेंट उतना ज्यादा रहेगा आपके काम के साथ. So it is always better to find for inspiration. And suppose if you are standing at a blank position right now, sorry. See, suppose if you are standing at a blank position right now, what you can do is you can think from the perspective that what I want to do professionally. Am I facing any social challenge or concern? What will
what is that something which attracts me, और मैं ये दिन भर सोचते रहता हूँ, या ये मुझे बहुत ज्यादा ऐसे लगता है कि इंसाइटफुल होने वाला है, or you read some nice books, or you read some nice articles, or you listen to somebody's speech and you get inspired. So find your inspiration, at least put some time on finding your inspiration and then select the topic. हम लोग थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, हम पहले टॉपिक चूज कर लेते हैं और फिर हम इंस्पिरेशन को ढूंढते हैं, और वहां हम स्कैटर्ड हो जाते हैं, वहां हम कनेक्ट लूज कर देते हैं. दैट इज अ रॉन्ग मेथड. रादर फर्स्ट सर्च फॉर योर इंस्पिरेशन एंड देन गो फॉर द टॉपिक. दैट इज द बेस्ट वे. PhD thesis or your dissertation needs to be passionate. अगर आपका passion उसमें नहीं है ना, तो it will not come out in that beautiful way which it should come out, because it is an opportunity given to you. And I will tell to all my young students that you understand that LLM is a professional course, rather legal, any legal course like LLB and LLM, we are doing a professional course. So society has lot of expectation from you that you are a professionally skilled person in the society, and they look up to you. And I can give you multiple examples where students have written dissertation, and those dissertation has been accepted in the law making process. आप आज कोई dissertation बना रहे हो, and just go and check the site of Ministry of लॉ एंड जस्टिस. दे कॉल फॉर सजेशंस. कितने तो बिल्स होते हैं जिन पे कॉल फॉर सजेशंस शुरू होता है. एंड इफ योर डिसर्टेशन और पीएचडी इज ऑन दैट टॉपिक, यू प्लीज सबमिट इट. You don't know that your suggestion might get accepted, and it has happened with number of students. Okay, so it is not that ki your work is not worthy. Ultimately you have to make it worthy. Okay, and that is why search for that inspiration, what exactly you want to do, and acceptance of anxiety. That बहुत लोगों को ऐसे लगता है I may not be able to do it, but that is not the case. We all are there. You get a mentor, you get a guide, you get a supervisor, so do not have that anxiety. But the first thing is just go for it. You have to do research. So take out all the myths from your mind that whether you can do it or not. You can do it. Okay. So how you are going to identify the area, like how you are going to search for that inspiration which helps you in doing PhD or dissertation. The very first thing, these are the set of 6 questions which we should ask to ourselves. Why do you want to choose this topic? What is the reason? Find that reason and then justify that reason with yourself. And then what is the relevance of this topic to your personal as well as professional life? Just think about it. Is it relevant? Sometimes, see, we can do some topic on which probably I may not be gaining any professional gain, but I may be having, like, I am in academics, so I know that I cannot practice, but I can do something, which can help to other people. So that might be my concept of choosing that topic. It can happen. So I need to find that relevance. Then where can you get the information for this topic? What libraries, is it accessible? Because being a student, I also understand that there are economic constraint, financial constraint. So we need to think about that also, because sometimes the information nowadays, it is easily accessible on internet. But please trust me, students, you get a very basic or level 1 information on the internet free sites. Then you should have some paid subscription. For example, you are having OPAC or elsewhere, or Springer access. Then probably you get good resource on internet. Otherwise, you need to go and literally search the libraries. So see the accessibility, that how far you can go to collect the database. और sometimes you choose an empirical research. Empirical यानी practical research, जहाँ पे हम survey based studies करते हैं. So वहाँ पे where you can go. Suppose I am sitting in Nagpur and I want to do a study on refugee law, etc. So am I able to go to all the borders where refugees are staying? If I am ready to do that, if I have a financial capacity to do that, then it is okay, I can take that talk. But I am not going there, and by sitting here and reading, I am just writing about refugee law. That's not the correct approach to be done, because refugees,
irrespective of whatever the legal status they have, they go through lot of mental, social, and physical discrimination. So we need to consider that also. So think from where you get the information and then decide the topic. Then who you can consult as the information provider, because in LLB and LLM definitely you get the mentors, but when you are interested in doing PhD, so you need to first find the guide, whether the supervisor is available, who is an expert in this particular topic, who has vacancy, etc. So just think and consult all those things, and then only go for identification of the topic, because it is also necessary that you and your supervisor should tune in with that topic. It should not happen that your supervisor is not knowing that topic at all, and you are just going with that topic. So you need to make sure that you are going to connect your topic with the expertise which your mentor has, and then probably we can do some good wonderful work here. And then of course you have to answer one very important question, that is, why is your topic important? See, make sure that your work is worthy enough. Okay, it is important for people, it is important for society. If you are just doing it for the sake of doing it, then it is better not to do it. Okay, so you have to find the significance of it, and then of course involve in discussion with the research consumers, जिनको मैं research stakeholders भी कहती हूँ. You discuss this topic, whatever topic you want to do, you discuss with at least 5 to 10 people every day who are directly or indirectly related with that topic, and let us see what are like their opinions, how they deal with this topic, उनको कैसे ठीक लगता है ये, या उनको कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो इन पे थोड़ा सा डिस्कशन होना चाहिए. That will give you an insight that exactly which perception of this topic I am going to do with it. See, अभी तक मैं एक word use कर रही हूँ topic. I am not going to title, because this is a journey from topic to title. It is a journey जहाँ पे हम from a very general topic I am going to a very specific title. और research हमेशा specific चीजों पे होता है, general चीजों पे नहीं होता है. So title framing is also very important. व्हाट इज द पर्पस हियर? सबसे पहले हमको ये समझना है कि मेरे रिसर्च का पर्पस क्या है. सबसे पहले की रीडर अंडरस्टैंडिंग हमें एनहांस करनी है. somebody should read your work, and see, if nobody is reading your work, then we need to introspect our own caliber, that why people are not reading, why somebody is not interested in my work. So we need to enhance readers understanding that yes, this is also one of the perspective which is there of this particular topic, which which for which there are already materials which is available on internet or in the library, etc., etc. And of course it also facilitates the study of replications, wherein further research can be continued. कि आज तो एक रिसर्च अवेलेबल है, बट कल हमें इसमें और डिटेल रिसर्च करना होगा या और इसमें एक्सटेंशंस करने होंगे. सो वी कैन डिस्कस दैट. आई कैन गिव यू वन वेरी स्मॉल एग्जांपल हियर. इफ आई वांट टू टॉक अबाउट राइट टू privacy, okay, right to privacy, we have seen a very long journey from not being recognized at all. जैसे MP शर्मा का केस हुआ या खरक सिंह का केस हुआ, जहाँ पे हमने देखा कि बहुत ही लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग हमने देखा कि राइट टू प्राइवेसी है, बट यहाँ पे होगा, बाकी जगह नहीं होगा, बिकॉज गवर्नमेंट कंट्रोल्स आर नेसेसरी, पुलिस नीड्स टू इंटरवीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So from that very non-existing perspective of right to privacy, we have taken a leap wherein that right to privacy has been considered as a part and parcel of our right to life and liberty. और अब हम उसमें एक्सटेंशन देखते हैं जहां पे हम कहते हैं कि रेप्लिकेट्स हो रहे हैं वहां पे, जैसे कि व्हेन इट इज ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, व्हेन इट इज इन सीसीटीवी, और व्हेन इट इज रिलेटेड विद सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल अब्यूजेस, तो कैसे हमको यहाँ पे प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है. आधार जजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जस्टिस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, wherein we have seen a new dimension has been given to right to privacy. So होता क्या है ना कि
from a very non-existing, continuously we are integrating new perspective, and that is what legal study is all about. We are not doing some static course. फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम उस कोर्स के पार्ट एंड पार्सल है जहाँ पे हमको रोज पढ़ना है. वी कैन नॉट से दैट ओके आई एम डन विद दिस टॉपिक, अभी ईयर इन ऑनवर्ड्स आई विल नॉट स्टडी, ऐसा नहीं होता है. तो रिसर्च में भी क्या है ना कि जो भी टॉपिक हम चूज करते हैं या हमारा जो पर्पस होना चाहिए रिसर्च का, वो ये है कि एक तो मेरे रीडर को समझ में आए, दूसरी चीज कि हम इसमें फर्दर रिसर्च के लिए फैसिलिटेट करें, हम फर्दर स्टडीज के लिए और उसके रेप्लिकेशंस के लिए कि इसमें और नया क्या हम रेप्लिकेट यहाँ पे कर सकते हैं. तो ये पर्सपेक्टिव डेफिनेटली होना चाहिए. देन फॉलोड बाय ऑफ कोर्स द क्लियर एक्सप्लेनेशंस एंड एनालिसिस व्हिच आई वांट टू give for this particular topic and title with my accurate reporting, जहाँ पे हम citations की बात करते हैं कि सारे citations correctly वहाँ पे होने चाहिए, because I cannot quote any false information. That is a very ethical part of research, that it should not be untrue and it should not be false. Okay, so we need to prove that accurate reporting, so that whatever expression I am doing or whatever document I am creating, that is a very pure, sincere, dedicated effort of mine, wherein I try to justify the title to the extent of my understanding and my explanations. ये एक उसमें sincerity reflect होनी चाहिए, और यही हमारा पर्पस होता है. एंड ऑफ कोर्स नीडलेस टू से इसके साथ साथ एक और पर्पस होता है कि आपको डिग्री भी मिले. आई डिड नॉट राइट इट हियर, बट दैट इज समथिंग विच इज इम्प्लाइड कि हाँ मुझे पीएचडी का डिग्री मिले, मुझे एलएलएम का डिग्री मिले, एलएलबी का डिग्री मिले. ये भी एक हमारा यहाँ पे हिडन पर्पस होता है. अब कैसे हमको लिखना है, तो इसको थोड़ा सा ना स्टेप बाय स्टेप हमको समझना है कि हमारे पास क्या होता है ना कि चाहे हम रिसर्च पेपर लिखे या डिसर्टेशन लिखे या पीएचडी थीसिस लिखे फॉर दैट मैटर, सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डील विद लॉट ऑफ डेटा. And when I say data, it is scattered, it is not profiled. It is something, wherein you just put human rights and then see how many pages Google are going to give you. Probably Google will say that Google has वो number लिख के आता है वहाँ पे some 1 crore 35 lakhs etc etc ऐसा कुछ word आएगा. So that much data is available. Along with that, I don't know, probably lakhs of books available, plus thousands of reports which are available. So lot of data is there. what I need to do is I need to organize that data. कैसे करना है कि अब यहाँ पे मुझे वो लीप लेना है from my topic to my title. Now I want to do a study on, let us say, human rights, wherein I am going to focus primarily on the version of city development, और आप कहोगे कि human rights city या ऐसा कुछ एकदम specific part of human right. I don't want to study all human right, or let us say any one sustainable goal or anything, जो भी आपको लगता है. तो हम क्या कर रहे हैं, उस broader data को organize कर रहे हैं मेरे टाइटल के साथ और उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, और अब जो मुझे पता चलेगा that will be my information. And I have to deal with this information only. I cannot go beyond this information, or rather I should not restrict कि बाकी का अभी इसमें नहीं आए, and I should think about in detail. So data से information जब हम जाते हैं ना, तो we do a horizontal study. Okay, horizontal हमारा काम होता है यहाँ पे कि हम shift कर रहे हैं. बट जब हम इंफॉर्मेशन में डिटेल में पढ़ते हैं तो हमारी यहाँ पे वर्टिकल स्टडीज शुरू होती है, बिकॉज आई एम गोइंग टू एनालाइज. ओके, आई एम गोइंग टू एनालाइज इन डिटेल अबाउट that information which is available on human rights city in tune with human rights. Okay, कि how a city can become a human rights city, जहाँ पे हम human rights perspective, sustainable development goals etc etc को यहाँ पे implement करें. तो अब क्या कर रहे हैं ना, इस information से हम हमारे basic ideas पे आ रहे हैं कि what exactly I want to do. Fine. Now with this analysis, now
I need to put all my research methodology जो आपने पढ़ा होगा ना, प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि कंप्लीटली स्किल बेस्ड होता है. सी यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज not something which needs to be copied, but this is something which needs to be understood. You know, आपको इतना डिटेल में वो पता होना चाहिए कि yes this is my concept and this is my variable. तो उसके लिए कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है. You just deal with it in the matter that how one particular concept is affecting or reflecting on something which is a variable. जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन राइट्स कॉन्सेप्ट है, अब उसमें ह्यूमन राइट सिटी क्या है, वेरिएबल है. तो यहाँ पे मुझे एक मेथोडोलॉजी को अप्लाई करना है विच इज गोइंग टू प्रोवाइड मी अ स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, कि ऑल ओवर वर्ल्ड इफ एनीबडी रीड्स माय रिसर्च ही और शी शुड अंडरस्टैंड. और जब हम ये करेंगे तो हम क्या कहते हैं, हम रीच हो जाते हैं थीसिस को, जो डिसर्टेशन का होगा या पीएचडी का होगा या रिपोर्ट राइटिंग का होगा. तो ये पूरा इक्वेशन हमें फॉलो करना है कि डेटा से हमें इंफॉर्मेशन पे जाना है, इंफॉर्मेशन में हमें आइडियाज को मर्ज करना है, उन आइडियाज में हमको हमारा स्किल लगाना है एज एन रिसर्चर. तो जो आउटपुट हमें मिलेगा वो हमारा थीसिस रहेगा. ओके, सो यहाँ तक हम आ गए हैं कि अब हम थीसिस तक पहुंच गए हैं. दिस इज अ वेरी टेक्निकल पार्ट. आई डोंट थिंक कि हमने ये डेफिनेशन वगैरह यहाँ पढ़ना चाहिए, बट एक चीज जो मुझे हाईलाइट करनी है वहां पे कि किसी भी डॉक्यूमेंट को हम रिसर्च रिपोर्ट, डिसर्टेशन या थीसिस क्यों कहते हैं. वन ऑफ द प्राइमरी रीजन इज दैट आई एम गोइंग टू कम अप विद द फाइंडिंग्स followed by the authentication and verifiable factor which I am going to give for my hypothesis, so that I can comment on anything. But if there are no findings, no verification of hypothesis, there is no authentication in what I am saying, then that is not the research report, thesis or डिसर्टेशन. तो ये एक चीज आपको यहाँ पे समझना है. और इसका वैलिडिफिकेशन हम कैसे करते हैं. सबसे पहला एस्पेक्ट होता है कि नॉलेज कंट्रीब्यूशन. व्हाट आर द कंटेंट यू हैव टेकन. नहीं तो बहुत बार होता है कि स्टूडेंट्स राइट इन वन ऑफ द लैंडमार्क केस. अरे विच केस, you have to justify what that case was, what is the name, what are the issues, what were the facts, what were the decision, and now how that decision is correlated with your topic. And we don't do that. And I have seen multiple, probably hundreds of dissertation and PhD thesis I have seen jahan pe student ekdam blindly quote karte hain. One case, second case, third case. You are not here for compilation. See, understand this thing. हमको क्या करना है यहाँ पे, knowledge contribute करना है कि I understand this is the case, I understand this is the judgment. Now how that judgment is going to help me in making my city as human rights city. Okay, so I need to write it. यहाँ पे वो analysis और skill हमें चाहिए. Authenticity means you have to give correct citation. You just cannot write anything what you feel कि इन्होंने ये बोला, वैसा नहीं होता है. Correct citations are important because you are putting a report जिसके हिसाब से आपको डिग्री मिलने वाला है. ओके, इट इज नॉट समथिंग कि मेनी टाइम्स वी सी के पीपल आर जस्ट राइटिंग एनीथिंग इन द न्यूज़पेपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सी, दैट इज अ न्यूज़. So tomorrow they can rectify that. Okay, that news was wrong, so we just apologize, etc etc. But what you are submitting is a thesis, is a report, is a dissertation which you cannot rectify later. Okay, and that is the reason you have to take care of lot of authenticity. Means सारे indicators और parameters को यहाँ पे explore करना है कि ये जो data है इस केस में ये जो बताया है वो कितना factually correct है, या ये author अगर कोई यहाँ पे research paper quote कर रहा है, so how much correct that is, that authenticity we have to go. We cannot just compile कि यहाँ से एक पैराग्राफ वहाँ पे. That is one thing, but what I have to do in research is I have to keep on expressing the analysis, the various mapping factors जो इसके साथ associate होते हैं. तभी हमारा रिसर्च रिपोर्ट तैयार होता है जिसको वेरीफाई करते हैं. एडजुडिकेशन होता है ना, लाइक एग्जामिनेशन होता है, वाइवा होता है, डिफेंस वाइवा होता है. लेट अस से यू आर सबमिटिंग अ थीसिस एंड देयर इज नो डिफेंस वाइवा. व्हाट इज गोइंग टू हैपन?
matter, it is not a thesis. So verifiability honi chahiye sari cheezon mein, wherein your research findings are getting confirmed that yes, whatever findings you are saying are true, whatever suggestions you are giving are executable, and whatever conclusion you have come with, that is a good conclusion. ठीक है, तो ऐसा ही रिपोर्ट हमें चाहिए है. इसमें से कोई चीज अगर नहीं होगी तो हमारा थीसिस इनकम्प्लीट है. सो थीसिस लिखने के लिए ना एक आपको टाइमलाइन अपने लिए खुद को बनाना पड़ता है, चाहे वो डिसर्टेशन हो या रिसर्च पेपर हो या थीसिस हो. सी अंडरस्टैंड दैट व्हेन आई टॉक अबाउट रिसर्च, आई एम वर्किंग इन 3 phases. व्हाट इज माय फर्स्ट फेज और फेज 1? दैट इज अ प्री रिसर्च फेज, जो मैंने आपको शुरुआत में कहा ना, जहाँ पे सारे मिथ्स को निकालो, डिस्कशन करिए, स्टेक होल्डर्स से बात करिए, टॉपिक ढूंढिए, गाइड ढूंढिए. Okay, so this is lot of, like, this phase requires lot of planning at multiple front. How much time I have, how much money I have, how much resources I have, what possibilities of myself getting good jobs, etc., etc., from this, from where I can get the data, from where I can get the statistical help, etc., etc. So सारा planning जो होता है ना, वो phase 1 में होता है. And it is understood that when I am writing the thesis or writing the dissertation, I have already entered in phase 2. तो ये जो phase आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये हमारा actual action phase होता है. यहाँ पे हम writing शुरू करते हैं. Okay, इस phase में even if you are not writing anything, does not matter, but this is the brightest phase, that is the phase 2, wherein we actually start working, we actually start writing. Okay, सो जब हम रिसर्च राइट करते, राइटिंग द डिसर्टेशन और राइटिंग द थीसिस, वी आर इन फेज 2. सो मेक श्योर दैट जब आप फेज 2 शुरू करो तब तक आपका फेज 1 पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए. इफ योर फेज 1 इज नॉट कंप्लीट, यू कैन नॉट स्टार्ट विथ फेज 2. एंड डोंट हरी. ओके, फेज 1 टेक्स लॉट ऑफ टाइम. अगर आपका रिसर्च फॉर एग्जांपल पीएचडी जैसे 3 साल का मिनिमम टाइम फ्रेम होता है, किसी यूनिवर्सिटी में चेंज भी हो सकता है, बट मिनिमम 3 years ओवर एंड अबव सब जगह होता है. सो प्रोबेबली 6 to 8 months और मे बी 1 year. Okay, give that much time to phase 1. Think एकदम properly. There should not be any intentional mistakes here. Okay, unintentional or sudden mistakes can come, but जानबूझ के ऐसा कुछ छोड़ मत दीजिए कि बाद में देखेंगे. नो, देयर कैन नॉट बी बाद में. यू हैव टू कंप्लीट एवरी प्लानिंग फेज इन योर फेज 1 एंड देन ओनली जंप ऑन टू फेज 2. ओके, ऐसा रिवर्स मत करना इसको. सो दिस इज देयर. एंड देन ऑफ कोर्स द फेज 3, दैट विल बी द पोस्ट सबमिशन. ओके, जहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन और बाकी सारी चीजें रिपोर्ट में करते हैं कि उसके जो फाइंडिंग्स है उसको हम कहीं और पब्लिश करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दिस विल कम इन फेज 3. Now, how to complete a research project or a report or a thesis? सबसे पहले जैसे मैंने कहा, phase 1, that is the planning and preparation. You have to plan everything when it comes to methodology. Okay, वो आपका जो आरएम होगा ना, हर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी प्रेस्क्राइब्स द रिसर्च मेथोडोलॉजी, कंप्लीट दैट फेज. Then the structuring of the report. Okay, this is what we are going to discuss, ki how we are going to structure the report, because structuring is very important. It gives you an organized form of information. फिर उसका स्ट्रक्चर करने के बाद how you are going to write it. Okay, there are few tips and tricks which you should understand when you get involved into writing the dissertation and then reviewing. See, don't hurry for submission. जैसे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे जिनके कुछ चैप्टर्स रेडी होंगे, कुछ होने के होंगे. What you can do is you can just simply review them one by one. Don't hurry. जब तक पहला चैप्टर अच्छी से रिव्यू नहीं हो जाता, रिवाइज नहीं हो जाता, don't just jump on chapter 2 or chapter 3, because that is a wrong method. Because it might happen that in the last chapter you still come up with some new perspective और फिर हमको reverse engineering करना. So slow and steady we need to go. We just cannot jump on कि पहला हाफ कंप्लीट है, फिर दूसरा हाफ कंप्लीट है, अभी मैं फोर्थ कर लेती हूँ, फिर मैं थर्ड करूंगी. That is a wrong method. Okay, step by step, finish one part, then jump to the next, then finish the next, then jump to the next. That is how you have to do, and then only do the submission. Get all
draft 1 and draft 2 corrected, verified from your supervisor, and then only request for submission. Till that time, do not hurry for submission. Okay, ultimately you are going to submit, everybody knows that, but उसके लिए घाई नहीं करनी है. Take your time and plan accordingly so that you can submit within the time. अब कैसे करना है, क्राफ्टिंग अ थीसिस, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आर्ट एक्चुअली. और आप भी उसे उसी तरीके से लीजिए. डोंट जस्ट कंसिडर इट एज अ बर्डन. ओके, सो मेक श्योर दैट whenever you are writing the thesis, now this is actually very important. यानी आज का हमारा डिस्कशन जो है वो इन्हीं 5-6 पैरामीटर्स पे होना चाहिए कि पर्पस एंड स्कोप. Suppose if I am thinking about, let us say I want to talk something about public policy, patents, or right to health, etc., etc. So I must know what is my purpose. I must know what is the scope. अगर मुझे ये सारी चीजें नहीं पता होगी तो I may not be able to write it in the required. दवाइयों में भी ट्रेड कर सकते हैं, एक्सेट्रा, वो आपको राइट दिया हुआ है. बट एट द सेम टाइम देयर इज अ राइट टू हेल्थ. और राइट टू हेल्थ में हमें पता है कि अगर हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हेल्थ केयर, तो गवर्नमेंट हैज टू डू इट. ओके, बिकॉज दैट इज बिकम अ पार्ट एंड इट इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज वेल. एट द सेम टाइम इट इज अ my fundamental right that I should get the health care, at least minimum health care तो भी हर इंडिविजुअल को मिलना चाहिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होने चाहिए, मेडिसिन, जेनेरिक मेडिसिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो दो राइट्स यहाँ पे क्लैश होते हैं, पेटेंटी का राइट भी और पब्लिक पॉलिसी का राइट भी. तो अब क्या है ना कि मुझे किस तरीके से लिखना है, मेरा थीसिस किस तरीके से होना चाहिए. तो उसके लिए मेरा जो पर्पस है वो एंड स्कोप है वो क्लियर होना चाहिए कि what is my concept here, whether I want to work with pharmaceutical patents primarily followed by public policy, या फिर मेरा प्राइमरी कंसर्न होगा यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी जिसका एक पार्ट में pharmaceutical patents लूंगी. So understand this thing, and many a times what researcher do, they just mingle with this thing. वो कभी इसको टॉप पे रखते, कभी उसको टॉप पे रखते, ऐसा नहीं होना चाहिए. यू अंडरस्टैंड कि अच्छा मेरा हीरो कौन है, मेरे थीसिस का हीरो कौन है. तो मेरे थीसिस का हीरो है पब्लिक पॉलिसी. सो आई एम गोइंग टू हाईलाइट पब्लिक पॉलिसी वर्जन एवरी टाइम. और फिर क्या, पॉलिसी फिर पेटेंट के लिए बनेगी, फिर वो फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स के लिए भी बनेगी. या तो हम सोचे कि नहीं, मेरा हीरो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स होने वाला है, तो आई एम गोइंग टू पुट दिस नरेशन कि फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स आर इम्पोर्टेंट. कैसे होते हैं, कभी कभी एक्ट के थ्रू चलते हैं तो कभी पॉलिसी के थ्रू चलते हैं. अंडरस्टैंड दिस थिंग. हम कभी इसको ऊपर करेंगे, कभी उसको ऊपर करेंगे, तो हम बहुत ही कोलैप्सिंग रिसर्च यहाँ बनाते हैं. एंड इट इज एविडेंट बिकॉज आई कैन सी कि बहुत बार ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि दे डोंट अंडरस्टैंड कि किसे हाईलाइट करें. हम कभी कभी हम एक चीज को हाईलाइट करते हैं, फिर बाय द टाइम यू रीच टू नेक्स्ट चैप्टर आप एकदम से वर्जन चेंज कर देते हैं. दिस शुड नॉट हैपन. तो इसीलिए सबसे पहले आपको आपका कंसेप्ट और उसका एसोसिएटेड वेरिएबल समझ लेना है. उसके हिसाब से पर्पस एंड स्कोप आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस चैप्टर में मुझे क्या करना है, कैसे मुझे शुरू करना है, कहाँ पे मुझे एंड करना है. इसको सबसे पहले आपको समझना है. Second thing which is very, very, very important, again bold, italic, underline, have a logical flow. Many a time students make this mistake that they don't follow the logic.
आप ह्यूमन राइट सिटीज पे बात कर रहे हो या फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स पे बात कर रहे हो, एनीथिंग ऑन इंटरनेट और एनीथिंग इन द लाइब्रेरी यू गेट एंड यू ट्राई टू पुट इट, but first see to it that whether it is necessary, is it required. It may be a good content but it is not necessary for your thesis. Understand this thing. जैसे हम होता है ना कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमें सारी चीजें अच्छी लगती है, हम सब कुछ खा सकते हैं, पर हम सही में वो खा रहे हैं क्या? हम क्या करते हैं, हम एक लॉजिकल फ्लो लगाते हैं कि मेरे बजट में क्या मिलेगा, अभी लंच का टाइम है कि स्नैक्स का टाइम है, फिर मुझे क्या पसंद है, हम वहां पे लॉजिक लगाते जा रहे हैं और फिर हम कुछ पर्टिकुलर पार्ट, एक या दो डिशेस वहां पे चूज करते हैं। सेम चीज यहाँ पे करना है, don't just go with it. Sometimes you may feel that this is the best content I get, but see, even if it is the best content, it is not required for your research. Understand this thing. Okay, so have a very logical flow, you know, wherein you are expressing, you know, दूसरी चीज होती है कि एक तो कंटेंट को बहुत केयरफुली सिलेक्ट करो क्या लेना है हमारे चैप्टर्स के लिए, दूसरा उसको सिंपल लैंग्वेज में इस तरीके से एक्सप्लेन करो कि आप किसी नॉन लॉ पर्सन को वो समझा रहे हो, लेट इट बी अ सिक्योरिटी गार्ड और एनीबडी, आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर नॉट वेल वर्स्ड, बट प्रोबेबली लीगल कंटेंट शायद नहीं आएगा, उस हिसाब से बताना है। एक अगेन अ स्मॉल टिप हियर, you are not submitting a dissertation or PhD thesis in English literature. So don't go with a very flowery or with a very you know dramatically written language. No, you have to just write a simple English which is grammatically correct, but it should be such कि आप आपके जो भी व्यूज है उसे आप क्या कर रहे हो, अच्छी से वहां पे रिफ्लेक्ट कर रहे हो, यू आर राइटिंग इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे कि एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड, राइट फ्रॉम द पर्सन हु डू नॉट बिलोंग टू दिस fraternity, he or she is also going to read. So ये कब होगा ना, जब मेरे कहने में लॉजिकल फ्लो होगा कि मैं पहले आपको बेसिक चीज बता रही हूँ, फिर मैं एक लेवल अप, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का, आई एम नॉट जंपिंग इन माय थॉट्स, and when this jumping of thought happens, everything becomes chaotic, then you cannot come to any conclusion कि हो क्या रहा है। कुछ कुछ मूवीज होती है ना जो बहुत हिट हो जाती है, एंड वन ऑफ द रीजन ऑफ दैट मूवी बीइंग हिट इज कि वो बहुत अच्छी से लिखी हुई होती है, जहाँ पे यू कम टू नो मेनी थिंग्स, यू नो, इजीली अनफोल्ड हो रहा है, सो देयर इज अ लॉजिकल फ्लो, नॉट इवन फॉर अ सिंगल मिनट वी थिंक कि कुछ गलत हो रहा है, यू नो, वी फील गुड बिकॉज वहां पे उसका जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ होता है, जो एडिटिंग होती है, बहुत अच्छी से होती है। सेम चीज थीसिस में होना चाहिए कि you know that there are thousands of ideas or documents जो related है मेरे टॉपिक से related, but उसको logical flow में चाहिए। अभी अगर मैं human rights cities के बारे में बात कर रही हूँ, तो definitely I need to talk first about humans and then why humans should have a right, how does this human right is connected with city and why human rights city is there। जब तक मैं ये logical flow नहीं आऊंगा, how can I just come up with human rights city? No, you have to understand. For example, suppose if you are writing something on doctrine of innocence, or you know, something related to uh, you know, any you know trafficking or any topic, उसका पहले जेनेसिस ढूंढो, कहाँ से ये शुरू हुआ है, फिर उसमें क्या स्पीशीज आए, हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग। अब जैसे बेल पे हम बात कर रहे हैं, लेट अस से आई एम टॉकिंग अबाउट बेल, व्हाट इज अ बेल, इट इज अ सॉर्ट ऑफ रेमेडी। अब अगर ये रेमेडी है तो रेमेडी क्यों चाहिए, you know, in any criminal offense, why this element of remedy is there, I need to begin with that, then and then only I will get the grip and that flow। I am just jumping on bail and writing, not a research, okay, ये हो ही नहीं सकता। लॉजिकल फ्लो बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही पे गलती करते हैं कि वो लॉजिक नहीं, दे जस्ट स्टार्ट विद दैट वेरी फर्स्ट थिंग, नो, दैट शुड नॉट बी देयर। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हमने बेल को रेमेडी ही क्यों रखा है, बेल ही क्यों, कोई और रेमेडी क्यों नहीं, ये लॉजिक हमें समझाना पड़ेगा, तब तक हम उसको मैप नहीं कर सकते। यू नो, मैपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च में। साइंटिफिक रिसर्च में तो ये सारा मैपिंग ना वो लेबोरेटरी करके दे देती है, बट व्हेन इट कम्स टू सोशल साइंस हमें ये थ्योरेटिकली प्रूव करना होता है बहुत बार, और कभी कभी हम एम्पिरिकल रिसर्च के थ्रू भी करते हैं कि वी हैव टू मैप दैट व्हाई दिस इज अ रेमेडी
एंड इफ नॉट दिस देन व्हाट वर्जन इट वुड हैव बीन अगर इसको हम इस तरीके से नहीं उस तरीके से देखते तो। ठीक है ना। अभी एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे प्ली बार्गेनिंग, हम प्ली बार्गेनिंग यूज करते हैं इंडिया में फॉर क्रिमिनल, यू नो, जो भी हमारे क्रिमिनल केसेस होते हैं वहां पे हम सोचते हैं प्ली बार्गेनिंग के लिए, विच इज अ वेरी एक्सेप्शनल काइंड ऑफ थिंग। बट अगर आप अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस पढ़ोगे तो प्ली बार्गेनिंग इज अ कंपल्सरी थिंग इन क्रिमिनल ऑफेंसेस। हमारे यहाँ पे एक्सेप्शनल है कि नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल, एक कुछ पर्टिकुलर केस में ही होगा। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर कि हमारा जो थ्योरेटिकल परसेप्शन क्रिएट होता है वो अलग है, और उस वजह से हम प्ली बार्गेनिंग को एक्सेप्शनल देख रहे हैं, और शायद उस वजह से वो इसको कंपल्सरी देखते हैं। तो ये राइटिंग फ्लो में आना चाहिए कि विच परसेप्शन यू वांट टू टॉक अबाउट। Now this is very very important. Now whatever my flow is, like let us say I am talking first about remedy, then about bail, and then etc etc. I have to give the evidence, I have to give the data कि ऐसे रेमेडीज को कहाँ पे रखा गया था कि हाँ बेल एक आप यू नो उसको टेम्पररी वहां पे अरेस्ट होने से बचा सकते हो एक्सेट्रा। Give the evidence and give the substantial evidence, you know, quote some good worthy documents here, some reports here, some statistics here, ये बहुत जरूरी है। और फिर आप उसका analysis and interpretation करें। I will suggest that do lot of quantitative research, lot of, because now legal research has transformed. We are no more a theoretical research fraternity जहाँ पे हम सिर्फ theories के basis पे बात करते हैं। That gone are those days, you know, doctrinal research is a history now. Now we have to move further with quantification. Either you do it on your own or you get the quantified reports. Okay, databases बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, बहुत सारी agencies है, बहुत सारे ministry के offices है, and every ministry has a publication tab. Okay, so just go and check ki what all publications they are doing and get the data, required data from that. So that is going to give you good evidence that what you are trying to पुट इन योर थीसिस, उसका एक बहुत अच्छा बेस वहां पे उस एविडेंस के साथ हो जाता है। और फिर आप उसको एनालिसिस एंड इंटरप्रेट करिए। सी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इज रिसर्चर्स, वो आपको ही करना है। बट वो फ्लो लाते वक्त हमने जो क्वांटिफाइड डेटा यूज किया है, फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ वेरी फेमस दिस थिंग, आपको भी याद होगा कि 50 किलोमीटर्स में वो लिकर बैन वगैरह ऐसे कुछ आया था बीच में, एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था, अप्पा बालू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आई गेस। Okay, that was a judgment. And then in that judgment what happened, they said कि you are going to put that ban. बट जब उस बैन का एविडेंस चेक किया तो दे रेफर टू द नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो डेटा था, वो वहां पे उन्होंने बताया कि जितने भी 27,000 एक साल में हमारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें से 95% एक्सीडेंट्स हाईवे पे होते हैं जो अल्कोहल इन्फ्लुएंस होते हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस बैन वाज नेसेसरी। बट later on that judgment got overruled. Why? Because जो दूसरा रिसर्चर था, एंड लॉयर्स आर रिसर्चर, ओके, सो आप हर केस में रिसर्च कर रहे हो, दूसरे लॉयर ने उसका अलग ही एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन बताया कि 50 मीटर्स या 500 मीटर्स के रेंज में मिलने वाला ही अल्कोहल होगा क्या? लोग घर से भी ला सकते हैं ना। सो यू जस्ट कैन नॉट पुट दिस रिस्ट्रिक्शन इन दिस वे। सो व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे हम एक सपोर्टिंग आर्गुमेंट प्लेस करते हैं जिसका फिर हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं। सेम चीजें हमें करना है। वी कैन नॉट स्टिक टू द वर्जन। यस, जजमेंट, रिपोर्ट्स, बुक्स, आर्टिकल्स, दे आर वन वर्जन और वन पार्ट ऑफ इट, बट उसको आप एक्सटेंड कैसे कर रहे हो, दैट इज व्हाट रिसर्च इज ऑल अबाउट। कंपाइलेशन इज नॉट रिसर्च, ओके। और जब हम ये करते हैं तो डेफिनेटली व्हाट वी आर डूइंग इज वी हैव टू गिव द साइटेशंस एंड रेफरेंस। बिना साइटेशन का और रेफरेंस का thesis, it's not a good thesis. And my simple equation is, मैं मेरे सारे students को ये कहती हूँ कि every page must carry minimum 5 references, minimum 5, maximum you can go to any number, okay. So minimum 5 references you have to give, and see, it is practically not possible that you yourself you are going to write 100 or 200 or 300 pages. So right to attribution is given in the copyright law, wherein you need to give attribution to the author who has written it.
It is a good practice. These are the research ethics. So जितने ज्यादा citations रहेंगे ना, उतना ज्यादा beautiful वो research होता है. And if मेरे जैसा कोई evaluator होगा, तो if you are giving good citation, probably I will give you few extra marks, just for citation, because you are validating. You can give citation for every line also, does not matter. So see to it that you are going to correct the refer the correct citation, correct source, because that is required, because that will give lot of validation to what you are saying. एंड वैलिडेशंस आर इम्पॉर्टेंट. और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, रिव्यू करिए और एडिट करिए. डोंट हरी कि सबमिट करना और पता चला हम हमारा ही स्पेलिंग गलत कर रहे हैं. सो डोंट हरी, यू जस्ट रिफाइन द कंटेंट. एंड इफ यू रीड, सपोज इफ यू आर राइटिंग वन चैप्टर टुडे, ओके, आप उसको फिर 2 दिन बाद फिर से पढ़िए, आप खुद ही उसमें 50 मिस्टेक्स निकालोगे. आफ्टर 5 days अगेन यू रीड, and then you will see that your understanding has completely changed about that particular chapter when you are going to read it for the 3rd or 4th time. You will revise it, और आपको ही पता चलेगा कि फर्स्ट वर्जन कितना immature वर्जन था, and this is such a good content now I am producing. तो ये कब होता है, जब हम उसे बार बार पढ़ते हैं ना, हमारा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, and then I am able to connect that with the other perspectives. बट अगर इसे मैं पढ़ूंगी ही नहीं, डायरेक्टली टाइप करके सबमिट करेंगे, तो वो कंटेंट में वो कनेक्ट तैयार ही नहीं होगा. सो रिव्यू एंड एडिटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हेनेवर वी आर इनटू द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग द थीसिस, हमें ये 5 पर्सपेक्टिव्स, ये स्पेक्ट्रम को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. थीसिस में ये सारी चीजें होनी चाहिए. योर फर्स्ट paragraph should be connected with your second paragraph should be connected with the third. There should not be any jumping कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा, सेकंड में क्या बोल रहे, थर्ड में कहाँ जा रहे. अंडरस्टैंड दिस थिंग, डू नॉट जंप, गो वेरी वेरी स्मूथली, वेरी वेरी कैजुअली, एक एस्पेक्ट से दूसरे एस्पेक्ट पे धीरे धीरे जाइए, उसे एक्सप्लेन करिए. और जब आप उसे एक्सप्लेन करेंगे ना, वहां पे आप रिफ्लेक्ट होने वाले हो. समझ रहे हो कि आपका कंटेंट आ रहा है, वहां पे आप लिख रहे हो. इट इज नॉट कॉपिंग फ्रॉम वन ऑथर, कॉपिंग फ्रॉम सेकंड, कॉपिंग फ्रॉम थर्ड, एंड माय चैप्टर. ट्राई दिस. शुरू में थोड़ा तकलीफ होता है, मेरे जो रिसर्च स्कॉलर है वो बताते हैं ये बात कि पहले 15 दिन मैडम हमें बहुत तकलीफ होता है इस एस्पेक्ट में आने के लिए, बट वंस दे स्टार्ट ना, दे स्टार्ट एंजॉयिंग दिस प्रोसेस. और जब हम चैप्टर 5th 6th तक आते हैं, तब तक तो वो प्रो हो जाते हैं कि दे नो दैट हाउ दे आर गोइंग टू राइट इट. सो जस्ट डेवलप दिस प्रैक्टिस, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, यू विल डू वंडरफुल इन योर थीसिस. ये रिपोर्ट का स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पे हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि ये सारी ही चीजें आपको आपके रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे मिल जाती है. दे आर मैंडेटरी, यू कैन नॉट स्किप वन और द अदर पार्ट ऑफ इट. चाहे वो लिस्ट ऑफ कंटेंट है, टेबल्स है, इंट्रोडक्शन, एम्स वगैरह वगैरह, ये सारा होना चाहिए अलोंग विथ एनेक्स्चर्स. ओके, सो प्लीज फॉलो योर यूनिवर्सिटी पेज फॉर दैट, सो दैट यू आर नॉट गोइंग टू मिस एनीथिंग. अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि कैसे हमें चैप्टर्स को बनाना है. यहाँ पे भी बहुत बार मिस्टेक्स हो जाती है. ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेनेवर यू आर इन दिस प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग द चैप्टर, एवरी टाइम कीप योर टाइटल इन योर माइंड. ऐसा होना ही नहीं चाहिए, चाहे आप डिसर्टेशन सबमिट करेंगे या आप पीएचडी थीसिस सबमिट करेंगे, दैट यू आर फॉरगेटिंग योर टाइटल. प्लीज डोंट डू दैट. Your title should be on your fingertips पे आपको याद आना चाहिए, and accordingly plan it. Okay, the very first chapter, that is your first chapter is introduction. It is same for dissertation and for PhD thesis. So यही format हम follow करते हैं. First part A will be the theoretical background, and this theoretical background, please understand, is not the theoretical background of the concept which you are taking. But this theoretical background is all about why you are doing PhD, why this particular topic is required. It is for that. Okay. And then part B is the research methodology, which will be like the standard format. Again, इसका format भी university share करते हैं.
always after your chapter 1 the chapter 2 has to be related with the conceptual understanding, यानी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया हीरो कौन है आपका, आपका हीरो पब्लिक पॉलिसी है या फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स है, आइडेंटिफाई करिए और पहले उसे लिखिए, ये होना बहुत जरूरी है। ओके, ऑलवेज स्टार्ट विथ कॉन्सेप्ट, यानी क्लियरिटी रहेगा, पर्पस और स्कोप हमारा क्लियर होगा। Followed by that, the next chapter has to be variable oriented. अगर पब्लिक पॉलिसी मेरा हीरो है तो वो किसके साथ है, हम पेटेंट्स के साथ पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स पे आएगा। दिस इज हाउ इट हैज टू वर्क। आप उसको वाइस वर्सा नहीं कर सकते क्योंकि वो जो फ्लो है वो आएगा ही नहीं। एंड देन ऑलवेज द नेक्स्ट चैप्टर हैज टू बी when you are going to connect the nexus between the concept and the variable। बहुत सारे डिसर्टेशन में और पीएचडी थीसिस में ये एब्सोल्युटली मिसिंग होता है चैप्टर, एंड देन आई वंडर दैट व्हाट एग्जैक्टली द रिसर्चर वांट्स टू कन्वे। ये चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी होता है और ये आपका पॉसिबल कंट्रीब्यूशन भी होता है, बिकॉज यू आर राइटिंग दिस ऑन योर ओन, यू आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश द कनेक्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, after that you can have any number, suppose if there are more than one variable, so next variable, and then followed by that it has to be, you know, जहाँ पे हम empirical data यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने कहा RM, theoretical background, research methodology, conceptual understanding, variable you are writing। after that there is a chapter on concept and variable। उसके बाद इफ सम ऑफ यू आर डूइंग सम एम्पेरिकल रिसर्च या क्वांटिफाइड डेटा के साथ, क्वांटिफिकेशन ऑफ डेटा के साथ आप काम कर रहे हो, तो ये चैप्टर जो बनेगा ना, मे बी योर चैप्टर 4 और 5, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपका सारा एम्पेरिकल डेटा आएगा जिसको हम कहते हैं कि यू आर मैपिंग द वेरिएबल, यू नो, वहां पे आपको डेटा कलेक्ट करना है, डेटा को इंटरप्रेट करना है और उससे आपको हाइपोथेसिस के साथ कनेक्ट करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो इस चैप्टर को आप यहाँ या इधर उधर ले लोगे ना, दैट इज नॉट द करेक्ट प्लेस। इट हैज टू कम ओनली एंड ओनली आफ्टर यू एस्टैब्लिश द नेक्सस बिटवीन द कंसेप्ट एंड द वेरिएबल। आफ्टर दैट ऑलवेज sure to have one chapter which is going to address about the issues and solution। see, एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स राइट कि द लॉ इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। ओ आई अंडरस्टैंड लॉ इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, व्हाट इज द सॉल्यूशन, गिव मी द ड्राफ्ट ऑफ दैट लॉ, व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्ड्स यू वांट इन दैट लॉ, व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्ट you want, you know, that is what research all about, not to say that law is not satisfactory, that all of us know। okay, so go with solution, don't restrict in just identification of issue, क्योंकि वो complete document नहीं है, complete document नहीं है तो वो research नहीं है, वो thesis नहीं है। okay, and then followed by finding, conclusion and suggestions। okay, findings होना बहुत जरूरी है, research के findings, उसी के साथ साथ रिसर्च का कंक्लूजन। अगेन बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, व्हेनेवर यू राइट कंक्लूजन मेक श्योर टू रेफर टू द verification of hypothesis in your conclusion, because that is the purpose of our research। if you are not verifying your hypothesis, what you are going to do with conclusion? okay, so it is very very essential, and then followed by the suggestion। और ये जो है ना, ये सजेशन और सॉल्यूशंस में फर्क ये है कि सॉल्यूशन हम यहाँ पे लीगल सॉल्यूशंस देंगे बिकॉज वी आर डूइंग लीगल रिसर्च। सजेशंस कैन बी इंटरडिसिप्लिनरी, सजेशंस कैन बी प्रोसीजरल, सजेशन कैन बी टेक्निकल, सजेशन कैन बी, यू नो, सोशो पॉलिटिकल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो यू कैन गिव that sort of suggestion। तो ये एक आपको फॉलो करना है while you draft the chapters। okay, last two things, 2 slides, I am going to wind up, I know I am over with time। Sachin sir, is it okay if I continue for another 5 minutes? Yes madam, no problem। okay, okay। now we have to do, what we have to do is we have to make an engaging thesis। okay, strategically लिखना होता है उसको। तो जब भी हम engaging thesis पे जाते हैं ना, या हमारा thesis कितना अच्छा हो सकता है, तो बहुत सारे perspectives पे researcher must think about, and my suggestion to all the researchers is that always have the habit of making a flow chart। अब जितनी चीजें फ्लो चार्ट्स के थ्रू करोगे ना आपके खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए, यू विल कम अप विद द करेक्ट लाइन ऑफ एक्शन, यू विल नॉट गेट स्कैटर्ड एनीवेयर। जैसे मैंने बताया पहले, मेरा पैशन और मेरी ऑथेंटिसिटी, इस पे हमको काम करना है।
Once I am done with it, what narrative I want, बताना क्या है. If I am getting confused, definitely I am going to collapse the research. रिसर्च एक पिरामिड स्ट्रक्चर की तरह होता है. जितना स्ट्रेट हम उस पे चढ़ेंगे ना, जितना क्लैरिटी ऑफ थॉट से जाएंगे, हम एक पिरामिड क्रिएट करेंगे. बट अगर हम इधर उधर ये हो जाएंगे, हमारे नैरेटिव सेट नहीं कर पाएंगे, तो वो कोलैप्सिंग होता है. वो बहुत एविडेंटली चैप्टर्स में पता चलता है कि व्हाट द रिसर्चर इज डूइंग, ही इज नॉट क्लियर इन हिज ओन वर्जन. पहले चैप्टर में कुछ और लिखते हैं, दूसरे चैप्टर में कुछ और लिखते हैं. आई हैव सीन वन PhD thesis which title starts with critical analysis of, I will not take the complete title, some right that person wants to talk about. और पूरे thesis में there is no chapter on criticism, there is no narrative on criticism, there was just compilation. So what is there? Is it a research? बहुत एविडेंटली दिखता है. तो ऐसा नहीं करना है. आपको आपका जो स्टैंड पॉइंट है कि मैं किस पॉइंट पे स्टैंड रहने वाली हूँ मेरे रिसर्च में, चाहे वो रिसर्च पेपर हो, डिसर्टेशन हो, थीसिस हो, यू नीड टू बी फर्म ऑन दैट. ओके, एकदम क्लियर लैंग्वेज पे एक्सप्रेशन होना चाहिए. इट शुड नॉट बी दिस और दैट एंड दिस एंड दिस एंड दिस, नो, देयरफॉर नो, हेंस हेंस हेंस, नो. ओके, सो दीज आर द वर्ड्स व्हिच आर नॉट एंटरटेन्ड इन रिसर्च. आप जो कह रहे हो वो आप करेक्ट कह रहे हो. और हम क्या करते हैं ना, हम बहुत कंफ्यूज करते हैं. तो लैंग्वेज एकदम क्लियर होना चाहिए. आपको कोई भी कंफ्यूजिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स प्लीज अवॉइड. ओके, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. उसके बाद इम्प्लीकेशंस आप जरूर सोचिए कि व्हाट यू आर राइटिंग, व्हाट इम्प्लीकेशन इट इज गोइंग टू क्रिएट. नंबर वन, इम्प्लीकेशन ऑन योर हाइपोथेसिस, वेदर इट इज गोइंग टू हेल्प इन वैलिडेशन और नॉट. एंड सेकंड, इम्प्लीकेशन ऑन द रिसर्च कंज्यूमर, जो पढ़ने वाला है, उस पर क्या इम्प्लीकेशन होगा. ये दोनों चीजों के बारे में थोड़ा सा सोचिए. सी, अगर हम परसेंटेज वाइज डिस्कस करते हैं ना, तो आपका कम से कम 40% ऑफ योर थीसिस शुड बी ऑन द डिस्कशन ऑन वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस. एंड व्हाट हैपेंड, लोग 4% भी उस पर डिस्कस नहीं करते. दे जस्ट डू सम वन पेज और द अदर, एंड देन दैट इज अ रॉन्ग थिंग. You understand the implication. So if you are creating a thesis of 200 pages, 80 pages should be on verification of hypothesis, कि उसके क्या implications है, क्या concerns है, ये hypothesis इसी तरीके से क्यों है, ये होना बहुत जरूरी है. ठीक है. हर चैप्टर को इंट्रोडक्शन होना चाहिए, हर चैप्टर को कंक्लूजन होना चाहिए. What the first introduction I told you, that is about why you have selected this topic. But जो chapter introduction होता है, उसमें हम chapter में क्या करने वाले होते हैं, ये बहुत जरूरी होता है. See, thesis writing में एक और चीज है, introduction हमेशा future tense में लिखना चाहिए, क्योंकि आपने अभी तक chapter किया नहीं है. But conclusion हमेशा past tense में लिखते हैं. तो मैं तो 2 लाइन भी पढ़ लेती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि thesis कितना वर्दी है, कि कहाँ और किस टेंस में रिसर्चर ने लिखना शुरू किया है. अगर वो रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, तो वो इंट्रोडक्शन भी पास्ट टेंस में लिखता है. दिस इज अ ट्रिक. वाइवा के वक्त टीचर्स ऐसे ही इवैल्यूएट करते हैं कि आपने सही में काम किया है कि नहीं किया है. सो प्लीज मेक श्योर टू राइट इट इन दिस फॉर्मेट. कंटेक्चुअल बैकग्राउंड्स देना बहुत जरूरी होता है, कि उस वक्त आपने वो पढ़ा है, उसके वजह से अभी आपको ऐसे लग रहा है, या अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर, या अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट. कंटेक्चुअल बैकग्राउंड्स बहुत दीजिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यूज लॉट ऑफ विजुअल आर्ट्स. आई डोंट लाइक कंटेंट, जैसे मैंने कहा ना, अभी वो ट्रेडिशनल डॉक्ट्रिन रिसर्च वाला नैरेटिव is gone. You need to be visually also very promising. इससे क्या होता है ना, unnecessary writing बचता है. जहाँ पे आप टेबल्स, चार्ट्स को यूज कर सकते हो, प्लीज यूज इट. डोंट, जैसे आपको कोई 10 पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं, तो जस्ट गिव अ चार्ट. no need to do the theoretical thing. So visually आपका रिसर्च जो थीसिस होगा, उसको बहुत अपीलिंग बनाइए, स्कॉलरली इंसाइट्स करिए. यू आर राइटिंग गूगल और विकिपीडिया, प्लीज डोंट डू इट. ओके, पुट सम स्कॉलरली राइटिंग्स इन इट, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि अच्छे ऑथर्स, अच्छे बुक, आई एम नॉट सेइंग कि बाकी ऑथर्स अच्छे नहीं है, बट जो स्कॉलरली कंटेंट होता है ना, उसको वहाँ पे साइटेशंस में कोट करिए, रादर देन just referring to some local thing, unless it is a newspaper. Okay, otherwise not required. So visually appealing होना चाहिए thesis.
और ये सबसे important है, when to reach out your supervisor, because I have seen many times students either don't contact their supervisor or they don't feel it necessary to contact their supervisor. See, please understand that this is a process which is a well known process across the world, and supervisor is allotted, your mentor is allotted to you with some purpose. Okay, and utilize this, what you can say, privilege which has been given to you as a student or as a researcher. Reach out to the supervisor, don't come to him or her at the very last moment when you are about to submit it and just for signature. I mean, we should not even sign that type of content, but make sure that you are going to reach out to your supervisor for all perspectives. Suppose there are some technical aspect you are not understanding, पीएचडी में तो बहुत बार होता है कि आरएसी कब है, आरआरसी कब है, कंप्लायंसेस कैसे करना है, कोर्स वर्क कहाँ पे है. सो जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, प्लीज रीच आउट टू योर सुपरवाइजर, डिस्कस विद देम. देन इन ऑल डिफिकल्ट टाइम्स, बिकॉज आई सेड ना, मेनी अ टाइम्स you want to do it but you are not able to do it because of some personal or professional stress which is there. Please communicate that with your supervisor. Many a times researcher don't communicate, and then there is a communication gap between the supervisor and the PhD scholar or the researcher. This should not happen. You at least tell them that you are going to through some difficult time or some stressful thing, and you will be completing your work once you feel that okay, now I can start, or etc. So please do that, and then discuss and share all the ideas. This is very 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 important. Even if you feel that your idea is immature or your discussion is not that intellectually good with your supervisor, but try to discuss it. At least your supervisor can suggest you 10 more things what you are thinking right now, or at least he can show you some direction कि अच्छा इसके साथ ये भी पढ़ लेना तो शायद आपको थोड़ा सा और अच्छा पता चले. So discuss every time. Make sure to meet your supervisor once or twice in a week, and that is what we lack. People don't turn up. That is a bad practice rather. And आप सिर्फ सुपरवाइजर से मिलना नहीं है, बट टॉपिक से डिस्कशन भी करना है. तो मैडम ने बोला है मिलने जाओ तो हम मिलने चले गए, ऐसा नहीं होता है. टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन, अपडेट करिए व्हाट यू आर डन विथ और व्हाट यू आर गोइंग टू डू, कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार, जो भी है, डिस्कस दैट थिंग. प्रोग्रेस बताइए, आपका प्रोसेस बताइए, एंड सी टू इट दैट हाउ इफेक्टिवली यू कैन डू इट. प्रूफ रीडिंग और कमेंट्स के लिए जरूर सुपरवाइजर के साथ डिस्कस करिए. वेरी 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 एसेंशियल. डोंट जस्ट सबमिट इट विदाउट शोइंग इट टू द सुपरवाइजर. और अर्ली स्टेजेस से सुपरवाइजर के साथ कनेक्ट रहिए. नॉट कि बाद में या जब आपको जरूरत पड़े, वैसा नहीं है. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फेज 1 या उसके भी पहले, व्हेन यू ट्राई टू सिलेक्ट द टॉपिक और आपको पीएचडी करना है या एलएलएम करना है, तब से आप उन सुपरवाइजर के कांटेक्ट में रहिए. और जो भी प्रॉब्लम आप दिमाग में सोच रहे हो आपके रिसर्च को लेके, उसको सॉल्व करने का ना एक इंटेंशन बताइए. कन्विंस करिए आपके सुपरवाइजर को दैट यू आर हियर टू डू सम हार्ड वर्क. यू आर नॉट हियर जस्ट टू enhance the number of PhD awarded to that guide. That is one part, but you show your dedication, and that is what is required. जब हम ये सब करेंगे ना, तो शायद हम एक बहुत अच्छा थीसिस यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे. So I will just end with the word that either write something worth reading or do something worth writing. और अगर ये दोनों चीज नहीं हो रही है हमारे थीसिस में, तो we are missing something. So put lot of efforts and very strategic effort. I am not saying that do some what you can say, just random thing, but put a very strategic and calculated effort, so that with minimum efforts you can get the maximum benefit in your thesis. So with this I end with my discussion. आपको अगर कुछ questions है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. Yes. Okay. Yes. Any question, anybody? Okay, madam.
Ma'am, I have Very, one question. I'm very thankful, madam. Within a very short time, you accept our invitation and ready to guide our research scholar. First and foremost, I express our sincere gratitude to our keynote speaker, Payal Sori Madam, for delivering such an insightful and enlightening session on how to write a PhD thesis dissertation. Your guidance has truly enriched our understanding of research methodology and academic writing. Okay. I also extend my sincere thanks to our college principal, Dr. Nathani Madam, for the motivating welcome address. I also appreciate goes to our respected faculty members, organizing team, and all the participants uh, for their active presence and cooperation. Thank you all once again for सर making this. शायद कुछ स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया है. आई डोंट नो वेदर दे हैव क्वेरीज और नॉट. Okay. कुछ दिख रहे हैं. If Anybody has anybody want to ask question, any query? Hello, ma'am. Yes, Lakshman sir. Yes, yes. Yeah, ma'am. Thank you very much for the wonderful session. It was really insightful. Actually, I wanted to know about the citation styles. I have three questions, in fact. Oh, But citation one is style. You want to know about citation style? Actually, yes, sir, actually, I wanted to know about citation styles, but that can be done in another lecture also. One more thing during the lecture. Initially, you said that gone are the days when doctoral researchers were there, and then we are moving on to the non-doctrinal researchers. And in non-doctrinal research, you also mentioned that we need to have 5 citations in every page. So that was a little bit of doubt in my mind. If we are into the non-doctrinal research, then we have our own data which we need to analyze. Then how is it possible for us to include citations in that okay, huge number? I got your query, sir. Yes, ma'am. First of one all, more, one more question is there because probably I may forget it later. In the concluding part of your sir, speech, actually, listen, Lakshman sir, you are asking me too many questions, which probably I may not be able to tell you in detail, but I will go one by one. You're talking about citations. The best way to know about the citation is, first of all, just check with your university which type of citations they are allowing, whether they are allowing APA style or Blue Book or ILI, whatever citation style they are allowing. You go to that site, there are PDF available, just stick to that and read those things and understand that citations are there. Number two, as I said, that you need to put citations on every page. See, citation is not only there for theoretical content. Now suppose if you are quoting some word, suppose if you are going to some xyz area and you ask them about the concept of privacy in a survey, तो वहां पे privacy जो word है उसके लिए आप citation दे सकते हो कि privacy का ये definition मैंने उनको पूछा था. तो ऐसे हमको citations create करने होते हैं. वो सिर्फ theory के लिए है, वैसा नहीं होता है. And what was your last question? I mean, you had one more question. I forgot. That was one regarding non-doctrinal research and number of citations. So, see, आप कोई जैसे privacy under article 21 ऐसे आप पूछ रहे हो, तो आप वहाँ पे article 21 का citation दोगे, तो ऐसे बहुत सारे citations हम create भी करते हैं. ओके, तो वैसा होता है. और एम्पेरिकल रिसर्च का जो चैप्टर है वहां पे एक आधी बार ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई साइटेशन ना रहे, बट एज पर मी ऐसा होता नहीं है. साइटेशंस हर जगह होते हैं, तो आप क्रिएट कर सकते हो वहां पे साइटेशंस. ओके, एनी अदर? बालाजी चालक, you, I saw your hand raised. Any question from you? No, ma'am. No. Madam, I have yes, one more. Yeah. If it's okay with you. In the concluding No, part, I was just asking other if there are any one of them, or else we no, can. this is really brilliant, because you said introduction should be in the future tense and conclusion should be in the past tense. There also I have a problem because drafting is not in the future tense. We draft the thesis after completing the research mission.
So, in my understanding, सर the सर whole प्लीज of the thesis, प्लीज आप थोड़ा सा धीरे बताएंगे, एक तो आपका वॉइस में क्लियर नहीं आ रहा है, मुझे वो सेंटेंस पूरे सुनाई नहीं आ रहे, थोड़ा धीरे धीरे yeah, बताइए. it is just about chance, madam. The chance of writing the thesis. Writing the thesis. Yeah, right. The chance of writing the thesis, because you mentioned introduction should be in the future tense. Introduction should be in few sentence. In the future tense, you said it should be in the Future future tense. tense. Okay. See, I am, suppose if, now understand, I want to talk about privacy and I am talking about concept of privacy as my first chapter. इंट्रोडक्शन जो मैं लिख रही हूँ ना, वो मैं प्रिवेसी का नहीं लिख रही हूँ सर. आई एम राइटिंग इंट्रोडक्शन. प्लीज अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. व्हेन यू आर राइटिंग इंट्रोडक्शन ऑफ एनी चैप्टर, you have to introduce in that chapter what the researcher is going to do. The researcher is going to study or the researcher will be studying the concept of privacy, or researcher will try to achieve the objective of understanding the concept. ऐसे लिखना होता है. This is how it has to be. वो तो आप बाद में मीनिंग डेफिनेशन में लिखोगे ना, what is privacy etc etc. इंट्रोडक्शन में रिसर्चर क्या करने वाला है उस चैप्टर में, उसे लिखा जाता है. ओके, यस. एनीबडी एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? Ma'am, I have question. Yes, yes, Madhura. If there is double masters, then how can we go for PhD subject? Okay, oh, that is out of this topic question, but then in that case you have a choice which particular subject you want to pursue. जहाँ पे आपका registration हो सकता है, अगर आपने, let us say you have done political science and LLM as well, so you can pursue in both, but one at a time होता है. दोनों जगह PhD का registration at the same time we cannot do. Okay, so you first identify which you want to pursue and go accordingly. Masters is important. मैम कंबाइन नहीं कर सकते क्या? वो फिर आपको टॉपिक सिलेक्शन वैसे करना पड़ेगा. लेट अस से, जैसे मैंने कहा ना कि पॉलिटिकल साइंस और लॉ है, सो यू कैन जस्ट रिविजिटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी विद द लेंस ऑफ 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, समथिंग लाइक दैट. यहाँ पे आपके प्राइमरी गाइड यू कैन टेक फ्रॉम फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस. को गाइड अगर कोई मिलता है तो फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, बट आई एम नॉट वेरी श्योर हाउ फार nowadays the guides are comfortable in becoming co-guide, because co-guide has no recognition, so nobody allows themselves to work on something which is not recognized. तो ये एक थोड़ा प्रॉब्लम होता है. You can choose an interdisciplinary topic, there is absolutely no problem. You can discuss science, biotechnology and patents, multiple topics people are choosing, so that is no restriction. Law is omnipresent. Anything and everything you do, law is there, so don't worry about topic. Okay, thank you, ma'am. Yeah. Anything else? Anybody? बराच वेळ झाला, तुमच्या लंचचा वेळ पण मी एनकरेज करताय, तर वी शुड स्टॉप हियर. Okay, madam. Once again, very much thankful for your fruitful and useful guidance, madam. And also thanks to all once again for making this webinar meaningful and successful. Thank you. Thank you very much. Have a great day ahead. Thank you. Okay, so thank you Sachin sir, and thank you Nathani ma'am for this opportunity. It was wonderful to interact with you all. So thank you so much. Good day.